आज हम लोग चैप्टर 4 कंटिन्यूटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 12 का कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट अबाउट द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी होता क्या है? अ रियल फंक्शन f(x) is said to be continuous at a point a of its domain if limit x extend to a f(x) exists and equal to fa. Listen again. A real function f(x) is said to be continuous at a point a of its domain if limit x extend to a f(x) exists and equal to fa. Other way we can say that a function f is continuous if limit x extend to a dash f(x) means left hand limit is it equals to limit x extend to a plus f(x) means right hand limit equals to fa. This is our LHL and this is our RHL. If limit x extend to a minus fx equals to limit x extend to a plus fx equals to fa. If these three are equal, then only we can say that the function is continuous. If any one is not equal, then the function is discontinuous. हाँ, तो इसका मतलब है कि हमारा लिमिट x एक्सटेंड टू a माइनस एफ(x) का मतलब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये आप लोगों ने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ा होगा। अगर ये दोनों इक्वल है तब हम लोग FA पे चेक करते हैं, और अगर ये भी इक्वल है देन ओनली हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। अगर इस तीनों में कोई भी एक इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट द पर्टिकुलर पॉइंट A पे। ओके, नाउ जस्ट वी सी वन एग्जांपल. Question is so that f(x) equals to x cube is continuous at x equals to 2. Now the question is so that the f(x) equals to x cube is continuous at x equals to 2. Means we have to check the continuity on x equals to 2. First we find the f2. What is the f2? When we replace the function which is equals to 8. Now we find the LHL. LHL means limit x extend to 2 minus that function is x cube. Means directly we can write here h extend to 0. The function is 2 minus h. We have taken here LHL 2 minus h cube. When we replace h 0, the value of LHL is 8. Again we solve the RHL. RHL means right hand limit. Limit x extend to 2 plus fx. When the function is when x equals to 2 plus the function is again x cube. So when we have taken the RHL, so the limit h extend to 0, the function is 2 plus h cube. When we replace the h is 0, again the 2 cube is 8. Now we observe here limit x extend to 2 minus fx equals to limit x extend to 2 plus fx, and is it equals to f2. We all three are equal to each other. Therefore we can say that f is continuous at x equals to 2. So now this is the answer. If both are equal, then only we can find the f2. If f2 is also equal, then directly we can say that if all three are equal, then only we can write here the f is continuous at x equals to 2. If anyone is not equal, then directly we write here f is, therefore f is discontinuous at x equals to 2. Okay. Now the question number 2. Question number 2 is discuss the continuity of the function
fx at x equals to 0 if function fx is given here 2x minus 1 if x is less than 0, 2x plus 1 if x is greater than equals to 0. Students, this question is very important for your board examination. Already this is a CBSE questions, and this type of questions will definitely come in your exam. The question is here, we need to find the continuity. We discuss the continuity of particular at x equals to 0. Just we start for the LHL. LHL means left-handed limit x extend to 0 less function. Student, first whenever we take the function when x is less than 0, the function is this 2x minus 1. 2x minus 1. And how we convert in the terms of h? Students, whenever we start either left-handed limit or right-handed limit, the concept about the left-handed limit is we put x equals to 0 minus h. Therefore, h extend to 0. Now the function converted h extend to 0. In the place of x, we replace here 0 minus h minus 1. When we replace h equals to 0, so 0 minus 0, the whole term converted 0, which is equals to minus 1. Now the LHL is minus 1. हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड लिमिट लिया x 0 से लेस पे, तो जब x 0 से छोटा होगा, कम होगा, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा 2x minus 1. आप सभी को सबसे पहले फंक्शन यहाँ पे रीड करना आना चाहिए. When x is less than 0, जब x 0 से कम है तो फंक्शन क्या हो जाएगा 2x minus 1. और जब x 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा 2x plus 1. तो सबसे पहले हमने LHL लिया, अब हम RHL निकालेंगे. RHL. Now the RHL is again x extend to 0 plus fx. When x is greater than 0, the function becomes 2x plus 1. Again the same process. This time we replace here, put x equals to 0 plus h. Therefore h extend to 0. Now the function is limit h extend to 0 to 0 plus h plus 1. When we replace h0, the function converted 1. Now just see LHL and RHL. LHL and RHL is not equal. LHL does not equals to RHL. LHL does not equals to RHL. यहाँ पे LHL और RHL हमारा क्या है, इक्वल नहीं है. तो जब LHL और RHL इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन क्या कंटिन्यूअस हो सकता है? नहीं. कंटिन्यूअस के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि LHL और RHL भी आपस में इक्वल होना चाहिए. अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो F0 पे निकालने की कोई जरूरत हमें नहीं है. यहां पे डायरेक्टली क्या होगा, अगर ये दोनों इक्वल होता तो हम F0 भी निकालते. आप चाहें तो निकाल सकते हैं, बट उसका कोई यूज इस क्वेश्चन में नहीं होगा. अगर ये इक्वल नहीं है तो हम लोग यहां पे लिखेंगे therefore F is discontinuous at x equals to 0. This is the answer. अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ तो यहां तक हम लोगों ने देखा कंटिन्यूटी का. कंटिन्यूटी का जनरली दो टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है. फर्स्ट, वी नीड टू डिस्कस द कंटिन्यूटी, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस. और सेकंड टाइप का क्वेश्चंस होता है, इसमें फंक्शन आपका ऑलरेडी कंटिन्यूअस गिवन होगा. आप लोगों को पर्टिकुलर कोई किसी कांस्टेंट का वैल्यू बताना है, a b c d अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, वहां पे आपको उसका वैल्यू बताना होगा. तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे में हम लोग डे 7 में हम लोग सेकंड पार्ट कंटिन्यूटी का डिस्कस करेंगे. तब तक आप इसको प्रॉपर रिवाइज कीजिए. अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपको हो रही हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा.
नेक्स्ट डे फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना पॉसिबल हो आप दूसरों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि उनकी भी डाउट क्लियर हो सके। थैंक यू। हो गया।